Today I am going to tell something about ovule, megasporogenes and female gametophyte. So my today chapter is, or in my today topic is ovule and microsporogenesis and female gametophyte. Okay, so today I am completely discussed about the female flowering plant or female sex. Okay, so without wasting time, let's start. First is, or the first subtitle is, the female reproductive structure. What is the meaning of female reproductive structure? You all are not that. I already tell you. The female reproductive structure is known as gynoecium. So the gynoecium is the female reproductive structure which helps in female reproduction. Okay. So, and I already tell you the gynoecium consists some carpel, or this is otherwise known as pistil. Okay, so pistils or carpel are combinedly form female reproductive structure or female reproductive organ, that is gynoecium. Okay, so look at this diagram. This is the female reproductive structure or structure of carpel. You all are know that the female reproductive structure is otherwise known as carpel. So this is the diagram of, or this is the structure of carpel or diagram of carpel. Okay, so the carpel can be divided into three parts. First is stigma, then style, then ovary. So this carpel can be divided into three parts, that is stigma, style and ovary. Okay, so the first point is gynacium is the female bisexual reproductive system which present in the female flower. Okay, so gynacium whole is the female reproductive structure, or this is the bisexual female reproductive structure which present in the female flowering plant, and it's contain some carpel members, that is known as pistil. Okay, so this contains some carpel members or individual members, that is known as pistil. Okay, the pistil may be 1, 2 or more. So the pistil is may be present in the flowering plant, maybe 1 or 2 or more in case of female flowering angiospermic plant. Okay, the pistil can be contain some carpels. There may be 1, 2 or more carpels. Okay, if the pistil is contain one carpel, that is known as monocarpellary, and the first is the carpel. So the point is, if the pistil contain one carpel, it is known as simple pistil. Okay, so if the pistil contain one carpel, that is known as simple pistil, and the flowering plant is known as monocarpellary and monopistillate. Okay, so what is the, it's maybe you have faced this question in your entrance. What is the meaning of monocarpellary, or what is the meaning of monopistillate? Okay, mono means one. If one pistil is present in a flowering plant, that is known as monopistillate or monocarpellary. Okay, and if two pistil or more than 2 or more than 3, okay, so if more than one pistil present in the carpel, that is known as bi or tri or multipistillate. Okay, more than one, that is known as multipistillate. If 2 pistil is present, that is known as bipistillate. If 3 pistil is present in a carpel, that is known as tripistillate. So more than one, if more than one pistil present in the carpel, that is known as multipistillate. Okay, so I already tell you the carpel can be divided into, or obviously divided into three parts, that is stigma, then style, then ovary. So first is stigma. What is the meaning of stigma? Stigma is the tip position of a carpel. In a carpel, the tip position is known as stigma. Okay, जो कार्पेल आप देख रही है उनका टिप पोजीशन को क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं.
Okay, so stigma is the tip position or top position of a carpel. The stigma may be different or may be multi-structures. That means stigma found in various shape and size. Okay, it may be various shape and size. It may be flattened shape or may be pointed shape, may be knot shape, slender, and may be hairy or not. Okay, that means the stigma is mainly present or mainly found in various shapes. That may be, or the stigma may be found in pointed shape or may be flattened shape, knot shape, slender shape, and hairy shape. Okay, this is the various shapes are found in case of stigma. Okay, then come to the style. What is the meaning of style? Style means, in my previous video I already tell you about the male reproductive structure. This is the female reproductive structure. You just remembered when I am telling you in male reproductive structure, I already tell you that is filament and anther. So filament is found in various shape and size. I already tell you, you just remembered. Like style have also contain stigma. Below the stigma, the style is present. Okay, or in other words, you may just say about this, or you may just say that is style is contain stigma, or or style is present below the stigma. Okay, this is the stigma. This is all about style. So third is ovary. What is the meaning of ovary? Ovary, you all know that where reproduction can be occurred or where the zygote can be occurred, where the embryo can be produced in the fertilization. Okay, so this is the ovary, and inside the ovary the ovule is present. Okay, inside the ovary the ovule is present, and the main focusing point is ovule. This is very important. This point is very important, that is ovule. Okay, inside the ovary the ovule is present. Now what is the function of ovary? Produce zygote. Okay, produce zygote or offspring or embryo when in case of fertilization. Okay, then this is the straight line is known as pollen tube. You all know that pollen can be produced, and here what happened when the endoecium or the pollen grains here enter and reached in this position, then reproduction occurred. Okay, this is the main focusing point. So the main focusing point is ovule. Ovule is also the long question. I telling you about this. So this is all about the female reproductive structure. And also you obviously you all know that seeds, where the seeds are present when the embryo developed, and when the embryo developed to form a seeds. Embryo develop होगी कौन तैयारी करिवो? सीड तैयारी करिवो. ओके, और ओव्यूल डेवलप्ड होगी कौन तैयारी करिवो? सीड्स तैयारी करिवो. सो सीड्स आर डेवलपिंग stages of ovule. Seeds are who is the developing stages of ovule? Seeds are the developing stages of ovule. When the fertilization finishing, when the fertilization is totally finished, then the ovule is developed to form seeds. Okay, or after, you may be said that after the fertilization the ovules are changes into, or the ovules are developed into seeds. Okay, this is all about a female reproductive structure in the flowering plant, that is angiospermic plant. This paper is only about the angiospermic plant. Okay, this is the higher plant. Then the cryptogam. Okay, you know that cryptogam is thallophyta, bryophyta and pteridophyta. So the angiospermic plant is a developing plant, then the thallophyta or bryophyta or maybe pteridophyta. Okay, so this is all about the female reproductive structure in flowering plant, that is angiospermic plant or angiosperm. Okay, so then the second is ovule. Introduction of ovule, or I already tell you, or I totally tell about the ovule. What the meaning of ovule? Before going to know about ovule, first you just
focused in 2 points, that is micro and mega. What is the difference between micro and mega? मुझे प्रीवियस वीडियो तुमको कही माइक्रोस्पोरेंजिया कथा, माइक्रोस्पोर कथा कही, एंड ये कह मेगास्पोरेंजिया और मेगास्पोर कथा कही. तो मन भर गोटे क्वेश्चन आसो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेगा एंड माइक्रो. सब मन रखो, यू ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दैट इज माइक्रो. होया द माइक्रो जिते तुम कौन से गोटे फ्लावरिंग प्लांट कथा पढ़ो तो माइक्रो कथा पढ़ो, जेकोसी क्षेत्र में माइक्रो कथा पढ़ो जानवे दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. माइक्रो कथा पढ़ो माने सो जेकोसी टाइम रे जी भी तुमको कहूँ माइक्रो कथा तुमको जब कहूँ किए तुम आखि बुझी कह दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एंड जो तुम मेगा कथा उठाओ व्हेयर द मेगा इज प्रेजेंट, दैट इज नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और सिस्टम. सो दिस इज द basic difference between the micro and mega. Okay, micro is the male reproductive structure and mega is the female reproductive structure. So let's start. Ovule. What is the meaning of ovule? Where the ovule found? I already tell you. Ovule is found inside the ovary. Ovule केउंट देखा जाए? Where the ovule can be seen? The ovule found inside the ovary. Ovary भितरे कौन देखा जाए? Ovule देखा जाए. Okay. केउट देखा जाए? इन ए कार्फिल. ओके, पूरा कार्फिल गोटे ओभारी भितर कौन देखा जाए? ओव्यूल देखा जाए. एंड इट इज रिप्रेजेंट एंड द ओव्यूल रिप्रेजेंट द मेगास्पोरेंजियम. ओके, व्हाट इज द ओव्यूल रिप्रेजेंट? द ओव्यूल रिप्रेजेंट द मेगास्पोरेंजियम. ओके, द ओव्यूल इज अटैच्ड इन द प्लासेंटा. जिते कौन सी गोटे फ्लावरिंग प्लांट कथा पड़ो, फीमेल कथा पड़ो, सब बड़े ओव्यूल केउंटी देखा जाए? प्लासेंटा को अटैच करके थिबो. दिस इज नोन एज प्लासेंटेशन. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लासेंटेशन? Placentation is attached or the placenta in case of flowering plant, that is known as placentation. Okay, so then the typical developed ovule contains, साधारणतः भाव में ओव्यूल गुड़िक डेभलप्ड होकर किसी पार्ट रे क्लासीफाई होता से गुड़ कौन कौन? फर्स्ट इज फ्यूनिसिल, देन हिलम, देन राफी, देन इंटुगेमेंट्स, देन न्यूसेलोस. ओके, सो ओव्यूल क्या क्लासीफाई होती? फर्स्ट इज फनिसिल, देन हिलम, देन राफी, इंटुगेमेंट्स एंड न्यूसेलोस. Okay, so first is phonicil. What is the meaning of phonicil or what is the definition of phonicil? Phonicil टा कौन? Phonicil आम कहा को कहिबा. Okay, so now you just look at this structure. This is the typical structure of ovule. Ovule रो गोटे आम तो जे टाइप्स रे जे क्लासिफाई करले से टाइप्स को एई डायग्राम राम रे आम दर्शे जे मु आपो जे नोट टा देबी पूरा क्लियरली देखा जिवो. Okay, so start करिवा. Phonicil is the stalk-like structure. This is the stalk-like structure where the ovule is attached. Phonicil होउची गोटे stalk-like structure जेटी की ovule टी अटैच होके थाए, ovule टी लागी की थाए. ओके, सो phonicil क्या है? Phonicil ऐसे एक पदार्थ है और ऐसे एक चीज़ है जिस पे ovule अटैच होता है. ओके, सो phonicils is the stalk-like structure where the ovule is attached. This is funicle. This is the funicle. जेठी कि ovule से कौन अटैच ही रहिबो. Okay. The point where the funicle is attached, that is known as hilum. What is the meaning of hilum? Where the funicle or at the point where the funicle can be attached, this is known as hilum. Okay. In some ovules, the funicles are runs in its body and contain a small distance. This is known as raphy. तो what is the raphy? raphy कौन? raphy होची किछि ओव्यूल्स रे फनिकल गुड़िक रनिंग अवस्था देखा जाती. जो से रनिंग करती से स्मॉल डिस्टेंस कंटेन करती और स्मॉल रिजेस कंटेन करती कौन कह जाए? राफी बोली कह जाए. ओके, देन कौन से गोटे ओव्यूल रे गोटे बा दुईटी कभर्स देखा जाए. ओके, इन द ओव्यूल्स दे हैव कंटेन 1 or 2 कभर्स, दैट इज नोन एज इंटुगुमेंट्स. तो इंटुगुमेंट्स कौन? इंटेगुमेंट्स कौन? इंटेगुमेंट्स होची जेकोसी गोटे ओव्यूल रे दुई बा
गोटे बा दुईटी कवरिंग देखा जाए ताको कौन कहा जाए इंटुगेमेंट बोली कहा जाए। एटा गोटे ओव्यूल स्ट्रक्चर एठी गोटे बा दुईटी कौन देखा कवरिंग देखा कौन कहा इंटेगुमेंट बोली कहा जाउछि। ओके देन द इंटुगेमेंट्स कंटेन द सेंट्रल मासेस। ओके इंटुगेमेंट कौन करे इंटुगुमेंट्स कौन करे द इंटेगुमेंट्स consist or covers the central mass that is known as nucellus. What the meaning of nucellus? Nucellus कौन nucellus ହେଉଛି गोटे इंटेगुमेंट्स कौन करि थाए गोटे सेंट्रल मास को कवरिंग करके रखी थाए घोड़े की रखी थाए ताको कौन कहा जाए न्यूसेलस बोली कहा जाए। द इंटुगेमेंट्स मे बी वन और टू प्रथम कही इंटेगुमेंट्स कौन है गोटे बा दुईटी थाए इंटेगुमेंट्स मे बी वन और टू जेकोसी ओव्यूल जो ओव्यूल इंटेगुमेंट गोटे देखा जाए कौन कह जाए यूनिटैग्मिक बोली कह जाए एंड जो दुईटी इंटुगेमेंट देखा जाए तो कौन कह जाए बाइटैग्मिक बोली कह जाए। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटैग्मिक एंड बाइटैग्मिक इन ओव्यूल्स with a one इंटेगुमेंट्स इज कॉल्ड यूनिटैग्मेंट्स एंड if the two इंटुगेमेंट्स इज प्रेजेंट that is known as बाइटैग्मिक। बुझिपाल सो जोठी गोटे मात्र इंटेगुमेंट देखा जाए कौन कहला यूनिटैग्मिक कहला जोठी दुईटी इंटेगुमेंट देखा तो कौन कह बाइटैग्मिक बोली कह नोट रे क्लियरली अंडरलाइन कर रखी क्वेश्चन बढ़िया से लिखिब कि पारिबो और बहुत सुंदर बुझी पारिबो। ओके कौन से गोटे इंटेगुमेंट कौन कथा है द आइदर साइड ऑफ एन इंटेगुमेंट कंसिस्ट ए नेरो ओपनिंग इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। जिते बड़े कौन से गोटे इंटेगुमेंट्स कौन कथा है बोथ साइड रे कौन करता है किसी नेरो ओपनिंग रखी था किसी ओपनिंग साइड थाए ताको कौन कहगला माइक्रोपाइल बोली कहगला। एवं द माइक्रोपाइल लोकेटेड एट द अपोजिट पॉइंट ऑफ द बेस ऑफ ओव्यूल ओव्यूल रो अपोजिट पॉइंट रे कौन देखा जाए माइक्रोपाइल देखा जाए। दिस इज नोन एज चालाजा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चालाजा माइक्रोपाइल लोकेटेड एट द अपोजिट पॉइंट ऑफ द बेस ऑफ ओव्यूल दिस बेस ऑफ ओव्यूल इज नोन एज चालाजा। ओके so the micropyle and the chalaza remain exactly in opposite direction of a ovule ovule ro opposite direction किए के देखा जानती micropyle and the chalaza। suppose this is the micropyle the opposite side रे कौन देखा जीवो chalaza देखा जीवो। ओके clear then the nucellus contains the megasporocyte न्यूसेलस कौन करता है किसी मेगास्पोरोसाइट को कंटेन करके रखी थाए और मेगास्पोर मदर सेल को कंटेन करके रखी थाए। द न्यूसेलस इज थिकनेस ग्रेटली भेरीज इन एंजियोस्पर्म साधारणतः भाव में कौन से एंजियोस्पर्मिक प्लांट न्यूसेलसटा बहुत थिकिंग देखा जाए बहुत मोटा देखा जाए थिकनेस तार थाए एवं ता थिकनेस को बेसिस करके न्यूसेलस को कौन कराई किसी क्लासीफाई कर किसी केतेक भागर विभक्त कराई एंड दीज आर सो जब कहली अकॉर्डिंग टू द थिकनेस the nucellus of a ovule can be classified into some parts and these are first is carcinuclear first point is or the first classifying point is carcinuclear carcinuclear when you have identified the carcinuclear types of nucellus which more than one hypodermal layer जोठारे गोटे रु अधिक कौन थी सो जोठी गोटे रु अधिक हाइपोडर्मल लेयर थी क्या भितर बिटवीन मियोसाइट एंड न्यूसेलस अपेक्स मियोसाइट एंड न्यूसेलस अपेक्स भितर जदि मोर देन वन हाइपोडर्मल लेयर थी ताहले तुम जानिबो जे दिस न्यूसेलस इज द कार्सिन्यूसेलर टाइप्स ऑफ न्यूसेलस। ओके यही प्रकार न्यूसेलस केउठी देखा जाए सिनामोनम टाइप्स रे एंजियोस्पर्मिक प्लांट रे सिनामोनम टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट रे कौन देखा जाए कार्सिन्यूसेलर टाइप्स ऑफ न्यूसेलस देखा जाए। ओके नोट रे पूरा क्लियरली लिखा है। देन कम टू द सेकंड इज और सेकंड पॉइंट इज वीकली क्लासिन्यूसेलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीकली क्लासिन्यूसेलर तो केमती जानबे जे एटा गोटे वीकली क्लासिन्यूसेलर टाइप्स ऑफ न्यूसेलस बोली जोठी कि व्हिच कंसिस्ट वन हाइपोडर्मल लेयर ये कौन कथा है मु फास्ट कौन कही मोर देन वन हाइपोडर्मल लेयर थाए बट यही क्षेत्र में कौन थाए गोटे मात्र हाइपोडर्मल लेयर थाए क्या भितर मियोसाइट एवं
न्यूसेलस आपेक्स मझिरे गोटे मात्र हाइपोडर्मल लेयर थे तुम कौन जान दिस इज द वीकली क्लासी न्यूसेलर टाइप्स ऑफ न्यूसेलस एवं यही प्रकार न्यूसेलस क्यों देखा जाए डाइसिलोस्टेमा नामक गोटे एंजियोस्पर्मिक प्लांट रे वीकली क्लासी न्यूसेलर टाइप्स ऑफ न्यूसेलस देखा जाए ओके क्लियर then third is pseudocrasy nucellar what the meaning of pseudocrasy nucellar types of nucellus जेउठी कि where without hypodermal cell layer between the myocyte and the न्यूसेलस apex एवं myocyte भितर जदि कौन सी प्रकार हाइपोडर्माल लेयर नथिबो ताले तुम कोन जानिबो दिस इज द pseudocrasy nucellar types of nucellus and these types of nucellus present or found in case of Sagittaria types of angiospermic plant. Okay. Then fourth is incompletely tinui nucellar. What is the meaning of incomplete or incomplete tinui nucellar? So without hypodermal layer between myocyte and nucellus apex. एटा मध्य न्यूसेलस एवं मेओसाइट भितर कौन से प्रकार हाइपोडर्मल लेयर नथिबो बट किंतु विथ हाइपोडर्मल टिश्यू एट द न्यूसेलस फ्लैंक्स बट न्यूसेलस फ्लैंक्स रे हाइपोडर्मल टिश्यू देखा जाए बुझिपालो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्यूडोक्रासी न्यूसेलर एंड इनकम्प्लीटली ट्यूनी न्यूसेलर स्यूडोक्रासी न्यूसेलर एंड इनकम्प्लीट ट्यूनी न्यूसेलर डिफरेंस होची बोथ आर सेम बट कौन देखा गला स्यूडो न्यूसेलर कौन कही मु हाँ मेओसाइट एंड न्यूसेलस आपेक्स भितर कौन से प्रकार हाइपोडर्मल लेयर नथिबो बट इन केस ऑफ इनकम्प्लीटली ट्यूनी न्यूसेलर बिटवीन द मेओसाइट एंड द न्यूसेलस apex the so between the pseudocrasy nucellar and the incomplete tuny nucellar भितर डिफरेंस कौन कौन कही प्रथम pseudocrasy nucellar रे कौन देखा जाए मेओसाइट एवं हाइपोडर्माल भितर कौन सी प्रकार हाइपोडर्माल लेयर देखा जाए नहीं मेओसाइट एंड न्यूसेलस apex भितर कौन सी प्रकार हाइपोडर्माल लेयर देखा जाए नहीं बट इन केस ऑफ incompletely tuny nuclear the hypodermal layer is present in the nucellus flanks एठी मध्य मेओसाइट एंड न्यूसेलस apex भितर कौन से प्रकार हाइपोडर्मल लेयर देखा जाए नहीं बट न्यूसेलस फ्लैंक्स रे किछि कौन देखा जाए हाइपोडर्मल टिश्यूज देखा जाए देन फिफ्थ इज tinui nucellar. What is the meaning of tinui nucellar types of nucellus? Without any hypodermic tissue in the nucellus. Jodi if the hypodermal layer is totally absent in the nucellus, then that types of nucellus is known as tinui types of nucellar. Okay, जदि कौन सी प्रकार न्यूसेलस रे हाइपोडर्मिक्स लेयर बा हाइपोडर्मिक्स टिश्यू टोटाली एब्सेंट थिबो टोटाली नथिबो तेबे आमे जानिबा जे दिस टाइप्स ऑफ न्यूसेलस इज द tinui nucellar types of nucellus. Okay, then the sixth is reduced tuny nucellar. How can we identify the reduced tuny nucellar types of nucellus? As in tuny nucellar but मेओसाइट पार्टली एक्सटेंडिंग बिलो द न्यूसेलस यही प्रकार न्यूसेलस टी बा रिड्यूस्ड ट्यूनी न्यूसेलर टी ट्यूनी न्यूसेलर सहित पूरापूरी इक्वाल बट ये कौन होता है मेओसाइट टी किछि एक्सटेंड होता है न्यूसेलस तल को मेओसाइट टी कौन होता है किछि एक्सटेंड होता है बढ़ी जाए ताले जदि मेओसाइट तल को कौन हो जदि कौन सी प्रकार मेओसाइट जदि एक्सटेंड होता देखिए तुम लक्ष्य कर तब जानव जे दिस टाइप्स ऑफ न्यूसेलस इज द रिड्यूस्ड ट्यूनी न्यूसेलर टाइप्स ऑफ न्यूसेलस एवं यही प्रकार न्यूसेलस क्यों एंजियोस्पर्मिक प्लांट देखा जाए फाइलिस नामक गोटे एंजियोस्पर्मिक प्लांट रिड्यूस्ड ट्यूनी न्यूसेलर टाइप्स ऑफ न्यूसेलस देखा जाए. ओके, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ ओव्यूल. देन द लास्ट पॉइंट इज एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैव also found nucellar cap and nucellar beak in some cases. किछि क्षेत्र रे किछि किछि क्षेत्र रे कौन देखा जाए एम्ब्रियोलॉजिस्ट कौन देखा जाए न्यूसेलर कैप एवं न्यूसेलर बीक भितर देखा जाए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ ओव्यूल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. सो स्टूडेंट, if you like this video then please like, share and subscribe. Don't be forget to tap the bell icon
for found my other notification or other video. So student, take care and bye. See you in my another video. So मु नोटा तुमको आ गोटे छोट वीडियो को देदेवी. So till then, take care and bye bye, tata.